Assalamualaikum dear students. It is education for class 11th. Our today's topic is primary education. Dear students, concept of primary education or elementary education. In primary schools or elementary school is typically the first stage of compulsory education, coming between early childhood education and secondary education. It is the first stage of formal education in range of basic subjects. It generally requires no previous formal education and is typically the beginning of systematic studies. Primary education is provided in schools where the child will stay and study in advanced classes until they complete and move on higher school or secondary schools. Dear students, primary education is compulsory for children to receive, although it is permissible for parents to provide it. The term primary education and elementary education have been used interchangeably in India. Elementary schools provides primary education for class 1st to class 8th within the age group of 6 to 14 years. Article 45 of Indian Constitution states that the state shall endures to provide within a period of 10 years from the commencement of the Constitution free and compulsory education for all the children until they complete the age of 14 years. Thus, in simple words, the elementary schools or primary school means 8 years of schooling, divided the stage into two sub-stages, 5 years of primary school stage and 3 years of middle school stage. According to Kothari Commission report, primary education is of two stages. Number 1, lower primary stage of 5 years duration and in age group of 6 to 10 years. Number 2 is higher primary stage, or we can say upper primary stage of 3 years duration in the age of 11 to 13 years. Dear students, प्राइमरी एजुकेशन या हम उसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं. प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन ये एक ऐसी एजुकेशन है जो बच्चा स्कूल जाने जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ से ये हासिल करता है. प्राइमरी एजुकेशन बाज़ाब्ता तौर पर एक सिस्टमेटिक एजुकेशन है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन है जो एक बच्चा फर्स्ट प्राइमरी से स्टार्ट करता है, फर्स्ट प्राइमरी से लेते हैं फर्स्ट प्राइमरी से, और ये प्राइमरी स्टेज जो होता है ये 8वीं तक होता है. इसको बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन. ये 8वीं जमात तक है, 8वीं जमात तक इंसान हासिल करता है. ये कंपलसरी एजुकेशन है. इंसान का जो आइन है, इंसान इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45, वो कह रहा है कि ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, ये फ्री और कंपलसरी हर बच्चे के लिए है. तो इसमें चूंकि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पर ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है. वहाँ पे फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, मिड डे मील्स, ट्यूशन फ्री भी है कि ट्यूशन बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको सैलरी गवर्नमेंट देता है. तो इट मीन्स इट इज़ फ्री इन ऑल द रेस्पेक्ट्स. तो ये प्राइमरी स्टेज जो है ये फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होता है, ये 8वीं तक होता है, और इसके दो हिस्से हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी. प्राइमरी मीन्स फर्स्ट पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक, और फिर 6ठी से 8वीं जमात तक जो होता है वो अपर प्राइमरी होता है, या उसको हम मिडिल भी कहते हैं, मिडिल स्टेज. तो इसके दो स्टेज है, प्राइमरी स्टेज और मिडिल स्टेज. प्राइमरी स्टेज फर्स्ट से लेकर 5वीं जमात तक है, और 6ठी से लेकर 8वीं जमात तक जो है वो मिडिल स्टेज है, और उसको हम अपर प्राइमरी भी कहते हैं.
اس کو پرائمری ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے اور ایلیمنٹری ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی کمپلسری ایجوکیشن ہے. اس کا جو مقصد ہوتا ہے یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بڑھ جائے اور ہر ایک بچہ کم سے کم بیسک ایجوکیشن حاصل کرے, وہ ایک لٹریٹ بنے. تو یہ ایلیمنٹری یہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ ہر ایک بچے کو دیا جاتا ہے فرام ایج آف 5 ٹو 14 ایئرس, یا ہم کہتے ہیں ایج آف 6, فرام ایج گروپ آف 6 ٹو 14 ایئرس. تو اس کو کوٹھاری کمیشن جو ہے, کوٹھاری کمیشن نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے 2 حصوں میں, لوور پرائمری اور اپر پرائمری. لوور پرائمری اسٹیج جو ہے دیٹ از فرام 1st ٹو 5th, اور یہ اس کے جو ایج گروپ ہے وہ 6 ٹو 10 ایئرس ہے. اور اپر پرائمری جو ہے دیٹ از اپر پرائمری اور مڈل اسٹیج جو ہے وہ ایج گروپ آف 11 سے لے کر 13 تک ہے, یا 11 سے لے کر 14 تک ہوتا ہے. تو یہ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جماعت کے لیے ہوتا ہے. تو شکریہ.